Hello guys, today we are going to talk about form validation in React plus TypeScript project. So let's move to a blog post. Zod validation in React plus TypeScript. So here, सबसे पहले तो Zod होता क्या है? तो Zod एक npm पैकेज है सिंपल जो कि हमें हेल्प करता है स्कीमा डिफाइन करने के लिए, वैलिडेशन स्कीमा डिफाइन करने के लिए किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। और फिर हम उस स्कीमा के अकॉर्डिंग किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को वैलिडेट कर सकते हैं। हम पार्टिकुलर फील्ड को भी वैलिडेट कर सकते हैं और पूरे एक बार में ही पूरे डेटा स्ट्रक्चर को भी वैलिडेट कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडेशन रिजल्ट इट गिव अस एरर मैसेज एंड वी कैन मॉडिफाई द एरर मैसेज अकॉर्डिंगली टू, ठीक है। नाउ here is the best practice how to use job validation in our project effectively. So first let's move to codebase. Okay, so मैंने पहले एक प्रोजेक्ट बना के रखा है जिसमें कि टेलमेंट भी एडेड है पहले से ही। तो लेट्स रन इट फर्स्ट, रन डेव। अब इसमें क्या लिखा हो डॉक्यूमेंटेशन में, सबसे पहले तो हमें जॉड को इंस्टॉल करना है। तो लेट्स इंस्टॉल इट फर्स्ट, लेट्स मूव टू अनदर टर्मिनल, कंट्रोल यू एंड इंस्टॉल इट। फिर इस ब्लॉग में जॉड वैलिडेशन को यूज करने के लिए एक कस्टम हुक क्रिएट किया गया है। फर्स्ट वी आर गोइंग टू क्रिएट अ कस्टम हुक यूजिंग दिस कोड, and then I will explain what is in this custom hook code. So hooks, let's create a form validation validation.tsx. Okay, now paste all the things here. So what is in this code? There is three things. First one error, validate field, and third one is validate form. तो ये यूज वैलिडेशन फॉर्म जो होता है वो सबसे पहले तो एक पैरम लेता है। ये पैरम में क्या लेता है? पैरम में एक स्कीमा लेता है जो कि हम क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग जॉड जॉड मॉड्यूल। तो ये स्कीमा क्रिएट करना बाद में मैं बताता हूँ कैसे होता है। उसके लिए आप चैट जीपीटी का, अपने डेटा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चैट जीपीटी का भी हेल्प ले सकते हो या फिर जाके इसके डॉक्यूमेंटेशन पे भी पढ़ सकते हो। लेकिन अभी के लिए मैं एक सिंपल स्कीमा बना के दिखाऊंगा आपको, दिखाऊंगा नहीं, वो ब्लॉग में है। आई विल कॉपी एंड पेस्ट एंड मेक यू अंडरस्टैंड ओनली। सबसे पहले तो ये एरर जो होता है वो सारे एरर्स को, जितने जो भी एरर आएंगे आपके फॉर्म में, उनको होल्ड करके रखता है या फिर स्टोर करके रखता है, ठीक है। देयर इज अ फंक्शन वैलिडेट फील्ड। दिस वैलिडेट फील्ड इज यूज्ड to validate a particular field of a form data. For example, there is fields like name, email, phone number, and many more in your form. Then you want to validate a particular field such as phone number. Then you can use validate field. This takes two params. First one is name and second one is value. Means if you are sending phone number for the validation, then you will send name of the key, that is phone number, and the value that you will get from the input field. Okay. So how this works, let's see. First one, it will see कि ये स्कीमा में ये फील्ड है भी या नहीं। अगर है तो ये आगे पास करेगा, नहीं तो ये यहीं से रिटर्न हो जाएगा। आगे पास करके वो उसका एक सिंगल स्कीमा, उसका सबसे पहले तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा सिंगल स्कीमा का, सिंगल फील्ड स्कीमा का। उसके बाद उसको मैच करवाएगा हमारे वैल्यू से। अगर वो वैलिडेट हो जाता है, मतलब सब कुछ सही है, तो वो इसके आगे जाएगा और सेट एरर में क्या करेगा, उस फील्ड को डिलीट कर देगा। मतलब उस फील्ड में कोई एरर है ही नहीं, तो वो फील्ड ही एरर में, एरर ऑब्जेक्ट में नहीं रहेगा। अगर कोई एरर कैच होता है, कैच ब्लॉक में जाएगा, फिर वहां पे वो एरर में सेट कर देगा जो भी एरर होगा। सो मीन्स इन ट्राई ब्लॉक, first it will validate the field
field. If it goes smoothly, then it will set the error and it will delete that name field from the error. Okay. If there is something wrong, then it will catch that error in catch block and then set the error to that object. Okay. In validation, there is a function named validate form. This is used to validate the whole form. It takes data, whole form data, and then parse it. Means validate it. If everything goes fine, then it will set the empty object, error to the empty object and return success true and error null. And if there is some error, then it will set the error and send the response success false error न्यू error. जो भी error object होगा न्यू क्रिएट होगा उसको वो सेंड कर देगा रिस्पॉन्स पे. और अगर वो कैच ब्लॉक में आ ही गया तो मीन्स देयर इज सम एरर इन द वैलिडेशन, सो इट विल रिटर्न सक्सेस फॉल्स रिटर्न एरर फॉर्म वैलिडेशन फॉर्म फेड. वैलिडेशन फेड हो गया तो एरर रिटर्न कर देगा. एंड दिस यूज फॉर्म वैलिडेशन जो मेरा फंक्शन है ये तीन चीज को रिटर्न करता है. फर्स्ट वन इज एरर्स validate field function and third one is validate form function which we are going to import in the form component and use it there. Now let's see how it works, how to use it. Okay, so let's go to the down and there is an example to show it. So we are going to copy paste this thing. Let's create a file form.tsx. Okay, control V, paste all the thing and then in app.tsx just import the form, my form. Now let's see what is the output. Yeah, this is the thing. Before that we have to understand what is in this form code. So सबसे पहले तो यहाँ पे एक स्कीमा बनाया गया है जो कि एक जॉड स्कीमा है ये. और इस फॉर्म में सबसे पहले हमारा कौन कौन सा फील्ड है सो देखो. There is name field, email field and age field, and name should be string, email should be string, and number should be a number will be string here, but we will treat it as number in our jod वैलिडेशन. प्री प्रोसेस करेंगे हम उसको, पहले तो वैल्यू लेंगे उसको फिर नंबर बना लेंगे, फिर जेड डॉट नंबर जो होना चाहिए उसका मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए 18, क्योंकि जो एज है वो मस्ट बी 18 होना चाहिए और 18 से कम होगा तो हमारा इधर मैसेज आएगा मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर. फिर अगर नेम जो है वो हमारा स्ट्रिंग है और मिनिमम 3 कैरेक्टर होना चाहिए, मतलब 3 से कम रहा तो हमारा इधर आएगा नेम मस्ट बी एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स. ओके एंड सो ऑन. एंड देयर इज अ फॉर्म डेटा, सेट फॉर्म डेटा. The use state, we are using use state to store the value of the form or handle the form. Simple. And there is a on change handler. This is a function to update the value of the fields in the form, and at the same time it also validate each and every field of the form in real time. Okay, and there is a function on submit. This on submit function does two things. First one, it validates the form first and get the result. So we will get the result that is success to error or something. ठीक है, console.log we are doing. If race dot success, अगर race dot success जो वो true आता है तभी हम फॉर्म के डेटा को शो करेंगे वरना नहीं करेंगे. यहाँ पे कुछ और लॉजिक हो सकता है, मतलब कुछ API calling and all that, you will do that things. Okay, now we have seen everything here. Let's see how it is working. If error this error every error is in this error object, so we are using this error to show the error. If error dot name means there is error in the name, error in the name exist मतलब कि जो नेम की है हमारा वो error object में
एग्जिस्ट करता है तब हम वहाँ पे error डॉट नेम को शो करेंगे। वैसा ही अगर ईमेल की एग्जिस्ट करता है तो हम ईमेल को शो करेंगे, वैसे ही हम एज को भी शो करेंगे। अगर हमें डिसेबल दिखाना है तो हम इसमें चेक कर सकते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इम्पिटी है या नहीं। अगर वो इम्पिटी है तो डैट इज वो बटन डिसेबल नहीं होगा, और इम्पिटी नहीं है मतलब अब वो डिसेबल्ड होगा। इधर अगर कुछ भी इधर हुआ तो आवर बटन विल बी डिसेबल्ड। ओके, so let's see how to check how to get object object length. This function we are going to use to make the button disable or enabled here. So we can know better. So here going to disable, so object dot key, not object. Here will be the errors, not equal to 0। और वो इक्वल टू 0 नहीं हुआ मतलब ये डिसेबल्ड है, मतलब कि वहाँ कुछ एरर है। ठीक है, तो लेट्स सी आवर कोड and console. We need console for submit. So let's see. Name must be 3 character at least. If we type 1 character, then it's so error. At the real time, name must be at least 3 character. So if we type more than 3 character or 3, then the error will be gone. Okay, email should be email. So invalid email format. Then this is wrong. Age must be 18, not less than 18 or ये. Let's keep it 7 and see what if we do submit. Yes, submit not work because this is disabled now. To get it disabled, well, bg gray 400. See, this is disabled because there is an error. So if we fix this error, then it will be enabled now and press. So this is giving our result. That's all. This is how you will use Jod in your project for form validation. तो आप फॉर्म को वैलिडेट करो अच्छे से। और अगर आपको जॉब वैलिडेशन से रिलेटेड कुछ भी जैसे कि वैलिडेशन स्कीमा ये सब चाहिए हो तो चैट जीपीटी, दैट्स ऑल, इट्स फाइन। एंड गो थ्रू द जॉब वैलिडेशन डॉक्यूमेंटेशन इफ यू वांट। ओके, बाय गाइस।